Good morning to everyone. This is the sum we will do now in your screen. BK Limited is formed to take over Bunty Limited and Kuber Limited. So to take over Bunty Limited and Kuber Limited, this BK Limited is formed. This is again a sum of a pure amalgamation. Two companies are getting close and the third new company is formed. The summary balance sheet on the date of amalgamation are as follows. Share capital of rupees 10 each. Equity shares 2,40,000, 1,60,000 in Kuber. 11% preference share 1,50,000 and 1 lakh. Divide by number of shares, divide by per value 10 rupees. You get the number of shares. And general reserve 45,000, 40,000. Profit and loss account is there, 9%. Debentures, creditors, other liabilities. Assets side, you have goodwill, building, machinery, furniture, investment, data, stock, cash and bank balance. Other current asset, share issue expense is a fictitious asset. BK Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each to public at a premium of 10%. So 10,000 shares were issued to the public at a premium of 10%. This will come in the new company's journal entries and new company's balance sheet. Bunty Limited and Kuber Limited were taken over by BK Limited on the following terms. Bunty Limited and Kuber Limited were taken over on the following terms. First one, for Bunty Limited, what terms are given? Equity shareholders are issued 7 equity shares of rupees 10 each at par in BK Limited and are to be paid ₹5 in cash for surrender of each 6 shares. तो यहाँ पे 7 new shares at par is given in BK Limited and ₹5 in cash also is given by BK Limited for surrender of 6 shares each. मतलब हर एक 6 शेयर के लिए 2 चीजें मिलेगी, या एक तो 7 equity share and ₹5 in cash. Means for every 6 shares held by Bunty Limited, held by the shareholders of Bunty Limited, for every 6 shares held by the shareholders of Bunty Limited, 7 equity shares will be given plus ₹5 in cash. 7 equity shares of ₹10 each at par plus ₹5 in cash for every 6 shares in Bunty Limited. 2 things will be given: 7 equity shares plus ₹5 in cash. Preference shares are to be paid at a 10% premium by 12.5% preference shares in BK Limited issued at par. तो जो करंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको 10% प्रीमियम मिलेगा और उसके बदले में दे विल गेट 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड issued at par. They will be discharged current preference shareholders of Bunty Limited, that is 1,50,000 plus 10%, that is 1,65,000 का 12% preference shares मिलेगा BK Limited में at par. All assets and liabilities are valued at book value except machinery, which is valued at 10% below book value, and debtors worth 1,60,000. All assets and liabilities are valued at book value, means balance sheet value, except machinery, which will be below 10%, valued below 10% of book value, and debtors ka value, new value is given 1,60,000.
Then liquidation expenses of 12,500 are to be borne by BK Limited. So liquidation expense will be paid by the of Bunty Limited will be paid by the new company, that is BK Limited. Liquidation expense of 12,500 will be paid by BK Limited. Then discharge the debentures of Bunty Limited at a discount of 10% by the issue of 13% debentures of 100 each in BK Limited. जो हमारे पास जो डिबेंचर है बंटी लिमिटेड में जो 1 लाख का डिबेंचर है वो 10% डिस्काउंट में डिस्चार्ज होगा and will be issued 13% debentures of 100 each in purchasing company, that is BK Limited. Then what else will be given? What else? Now next for Kuber Limited. Kuber Limited have to retain 3,000 cash for liquidation expenses. Kuber Limited has to keep aside cash of rupees 3,000 for liquidation expense. मतलब देखो बंटी लिमिटेड का लिक्विडेशन एक्सपेंस बीके लिमिटेड ने पे किया. BK Limited paid the liquidation expense of 12,500 on behalf of like Bunty Limited का ये BK Limited पे करने वाला है. But कुबेर लिमिटेड का जो liquidation expense है that will be paid by Kuber Limited themselves. So they have to keep aside 3,000 for that liquidation expense. Debtor and investment are valued at 90% of cost. Debtor and investment दोनों कितना रहेगा? 90% of cost. Kuber and debtors and investment जो भी बैलेंस शीट का वैल्यू है उसका 90% में हम वैल्यू करेंगे and they have told 90% of cost. Then machinery and stock are valued at 10% above cost. जो भी वैल्यू है उसका 10% above. And other assets and liabilities are valued at book value except fictitious asset. बाकी assets and liability हमें book value consider करना है. Preference shareholders are to be paid at 10% premium, 10% extra देंगे and we will be issuing what? 12.5% preference shares in BK Limited at par. Balance of PC is payable at balance of PC is payable in equity shares at par. Balance जो purchase consideration है, it will be paid through equity shares at par. Discharge the debentures of Kuber Limited at par by the issue of 13% debentures of rupees 100 each. So debenture will be discharged at par, and what we will be giving by issue of 13% debentures of BK Limited. The face value of equity share and preference share in BK Limited is 10 rupees each. तो इक्विटी शेयर भी 10 रुपीज का और प्रेफरेंस शेयर भी 10 रुपीज का ऑफ द परचेसिंग कंपनी, दैट इज न्यू कंपनी का जो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर है वो 10 रुपीज का रहने वाला है. व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, we have to show necessary ledger accounts in the book of Bunty Limited and Kuber Limited, and also we have to calculate the purchase consideration in amalgamation. First step is to calculate the purchase consideration. So we have to calculate purchase consideration and then we have to show ledger accounts
in the books of Bunty Limited and Kuber Limited. Ledger accounts means closing book ka Bunty Limited and Kuber Limited will be closed down to start BK Limited. So we'll have to prepare realization account, equity shareholders account, preference shareholders account, purchasing company, that is BK Limited account, equity shares, that is discharge of PC, equity share, preference share, 12.5% preference shares in BK Limited, equity shares in BK Limited, and finally cash account. So our first step will be to calculate the purchase consideration. Our first step is to calculate the purchase consideration. So let us start purchase consideration. So first we will start for Bunty Limited. So first let us start for Bunty Limited. Bunty Limited जो है उसके बारे में they have told how the PC discharged. That is given clearly. हमें पता है क्लियरली दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को 7 इक्विटी शेयर मिलेगा बीके लिमिटेड में एंड 5 रुपीज का कैश मिलेगा प्लस 5 रुपीज का कैश फॉर एवरी 6 शेयर्स. सो लेट अस स्टार्ट फॉर बंटी लिमिटेड. Equity shareholders. For equity shareholders, what we are giving? तो इसमें इन इक्विटी शेयर्स में क्या देने वाले? फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर्स में बोला है फॉर 6 इक्विटी शेयर्स. हाउ मच? 7 equity shares in BK Limited. This is what they have told. 6 equity share के लिए 7 equity shares मिलने वाला है. तो we know how many equity shares are there in Bunty Limited. बंटी लिमिटेड में 2,40,000 इक्विटी शेयर्स है. 1 इक्विटी शेयर इज ऑफ 10 रुपीज. सो 2,40,000 डिवाइड बाय 10 वी गेट 24,000. वी गेट फॉर 24,000 क्रॉस मल्टीप्लाई. हाउ मच यू विल गेट? टू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 24,000 into 7 divided by 6. How much you get? 28,000 equity shares of rupees 10 each, which will become 2,80,000. Right? 2,80,000. Okay, now one more thing equity share को मिलने वाला है. That is equity shareholder को in cash. 7 equity share plus 5 rupees. 2 रुपये. For 6 equity share 2 चीज मिलने वाला है. एक तो 7 equity shares कुबेर BK Limited में and ₹5 in cash. तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 24,000
इक्विटी शेयर्स कितना होगा, अगेन डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 24,000 into 5 divide by 6, you will get rupees. How much you will get? 24,000 into 5 divided by 6, you get 20,000. So this is for the equity shareholder. 2,80,000 का इक्विटी शेयर मिलने वाला है प्लस 20,000 का कैश. See, if you read this only, you will come to know that equity shareholder are to be issued 7 equity shares of 10 each in BK Limited. Par में are to be paid ₹5 in cash for surrender of each 6 shares. तो 6 शेयर सरेंडर करेंगे तो 7 इक्विटी शेयर मिलेगा प्लस ₹5 कैश मिलेगा. So we have done for equity shareholders, 2 things are there. One, though, they will get equity share and they will get cash. Now for preference shareholders, because PC has to be given to owners, shareholders. Now 2 type of shareholders are there, equity and preference. So let us read preference shareholder को क्या मिलने वाला है. Preference shareholder are to be paid at 10% premium by issue of 12.5 preference shares in BK Limited issued at par. So 1,50,000 है preference share बंटी में plus 10% premium. उसके बदले में क्या मिलेगा, 12.5%. ये 11% प्रेफरेंस शेयर है. बीके लिमिटेड में 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स मिलने वाला है एट पार. सो ₹1,50,000 प्लस 10% प्रीमियम, कितना अमाउंट, 1,65,000. 1,65,000. तो ये 1,65,000 के लिए क्या मिल, ये 1,65,000 मीन्स ये 1,65,000 के लिए क्या मिलने वाला है, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स of ₹10 each at par. Amount is 1,65,000. 1,65,000. तो ये प्रेफरेंस शेयर को भी हो गया, इक्विटी शेयर को भी हो गया. तो ये दिस बिकम्स द टोटल परचेज कंसिडरेशन ऑफ बंटी लिमिटेड. Add all the 3 lakh plus 4,65,000. This is for one company. Now same way ये बंटी के लिए था. Now we have to same way find out for कुबेर. For कुबेर लिमिटेड, कुबेर लिमिटेड का पीसी फाइंड करना है. तो कुबेर लिमिटेड में बोला है कैश में 3,000 is to be retained for liquidation expense and debtor investment का revised value, machinery stock का revised value. And one more thing here, preference share को 10% premium में
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाइक वी डिड इन बंटी लिमिटेड 10% प्रीमियम में मिलेगा, बट दे विल गेट 12.5%। मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलने वाला है, लेकिन बदले में जो मिलेगा वो है 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड एट पार। उनको उनके कंपनी के प्रेफरेंस शेयर के लिए का जो वैल्यू है वो एक्स्ट्रा मिलेगा 10%, बट दैट मच वैल्यू के लिए दे विल बी गेटिंग 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन BK Limited at par, and balance of PC is payable in equity share. But how much is the PC? That we don't know how much is the PC. And asset का revised value सब दिया है, सब नेट पेमेंट मेथड में नहीं, हम कैसे करेंगे? We will calculate by net asset method. We will calculate the PC by net asset method. So particulars rupees. Particulars rupees. So सबसे पहले what asset we have? Let us copy paste all of them. Only assets. fictitious asset तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा. Let us write A, all assets taken over by which company? BK Limited at revised value or book value. Okay, तो लेट अस सी. सबसे पहले गुडविल है. गुडविल का क्या वैल्यू, न्यू वैल्यू दिया है गुडविल का? गुडविल का न्यू वैल्यू नहीं दिया. सी गुडविल्स न्यू वैल्यू इज नॉट गिवन, सो वी विल टेक द ओल्ड वैल्यू 25,000. नया वैल्यू देंगे तो नया वैल्यू, नहीं तो ओल्ड वैल्यू, बुक वैल्यू. So we'll write here 25,000. Now building. Building का what is given? Building का भी न्यू वैल्यू नहीं दिया. Let us do one thing. Let us copy all of them and फिर बाद में हम इसका न्यू वैल्यू दिया उसका न्यू वैल्यू में चेंज करेंगे. So let us write अब now building का न्यू वैल्यू नहीं दिया, so we'll take the old value. Debtor and investment का 90% of cost. So let us see. Debtor and investment 90% of cost. So 80,000 का 90% में लेना है ना. 60,000 का 90%. So how much you will get? 90% means you get it 72,000. Here you get 54,000. See whether it is correct. And then we have machinery and stock are valued at 10% above cost. Machinery and stock. So machinery is how much? Machinery is 60,000. 10% above cost means 110%. 110%. या तो 10% अबाव कॉस्ट लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं. 60,000 plus 10%. So this becomes
110% करोगे तो भी सेम आंसर, यू विल गेट 60,000 प्लस 10% करोगे तो भी सेम आंसर. स्टॉक ऑल्सो सेम वे, 10% above the value, so 90,000 plus 10% या 110%, same value will get, this is 99,000. जिसके बाद next what is given, next अदर असेट्स का एंड लाइबिलिटी बुक वैल्यू है, वो तो हमने बुक वैल्यू में लिखा. कैश में 3,000 we have to keep aside for liquidation expense. So total cash how much we have, 8,000. So 8,000 minus 3,000 which we have to keep aside. So only 5,000 will be taken over by the new company, that is BK Limited, क्योंकि बाकी का साइड में रखने बोला है लिक्विडेशन के लिए. So we have written all the assets. So इसका टोटल करते हैं एंड लेस करेंगे. लेस बी all external liabilities taken over by BK Limited at revised value, revised or book value. So what external liability we have? कुबेर लिमिटेड में शेयर इंटरनल, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में व्हाट वी हैव डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटीज. ये तीन ही है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. लेट अस राइट डाउन external liabilities. External liabilities. So, what is given about the external liabilities? Discharge of debenture of Kuber Limited at par by issue of 13% debenture of 100 each in BK Limited. डिबेंचर को पार में ही करना है. पार मीन्स फेस वैल्यू, जितना दिया है उतने में ही करना है. पार जितना दिया है वही वैल्यू में हमें टेक ओवर करना है. सी डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर ऑफ कुबेर लिमिटेड एट पार, पार में ही वापस करना है. पार मीन्स फेस वैल्यू 1 लाख का 1 लाख की वापस करना है. क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटी नथिंग इज गिवन, सो वी हैव टू टेक द बुक वैल्यू. सेम वैल्यू वी विल राइट एंड देन टोटल. तो टोटल करो कितना आ रहा है, 1 लाख. Other liability, 1 minute. I have taken of other company ना, मुझे इधर का लेना था, मुझे कुबेर का लेना था. कॉपी करके मैंने बंटी का कॉपी किया. So that is my mistake here. What we have to do, we have to paste off कुबेर and by mistakenly we copied of बंटी. तो ये हम लोग तो कुबेर लिमिटेड का पीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कुबेर लिमिटेड का ये अमाउंट्स लेना चाहिए. सो दिस बिकम्स 1,64,000. ना पीसी कैसे निकाले, पीसी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी
So ये A है and this is B. So PC will be A minus B. Purchase consideration. This A minus B. Now first of all, add how much is A. A को add करो 25 plus 1,40,000 plus 66,000 plus 5,000 plus 72,000 plus 54 plus 99 plus 5 plus 10,000 is coming to 4,76,000. So how much PC you get? 4,76,000 minus 1,64,000. You get 3,12,000. This is the PC. PC मिल गया हमें. Now we will show discharge of PC. Discharge of purchase consideration of Kuber Limited. Because Bunty Limited का तो already given, already net payment, उनका payment ही दिया है. Payment दिया है मतलब वही discharge ही दिया हुआ है. So now let us see how we will do. हमें क्या बोला है? How to discharge Kuber Limited's PC. Here preference shareholders को देना है at 10% premium. उनको देना 12.5% preference shares and balance in equity shares at par. So first let us see for preference shareholders. For preference shareholders, how much we are going to give? First we want to know their amount. कितना अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का? 1 लाख प्लस 10% प्रीमियम. 1 लाख प्लस 10% प्रीमियम मीन्स हम उनको देंगे 1,10,000. और ये 1,10,000 में हम उनको क्या देने वाले? We are going to give them 12.5% preference shares of ₹10 each at par. So we are going to give them 1,10,000. जो बैलेंस है वो इक्विटी शेयर में देने वाले. बैलेंस फॉर ये नहीं लिखते इक्विटी प्रेफरेंस. वी विल नॉट राइट दिस डायरेक्टली. वी विल राइट इक्विटी शेयर इज बैलेंसिंग फिगर. इक्विटी शेयर इज बैलेंसिंग फिगर. टोटल पीसी हमें ऑलरेडी पता है. हमें ऑलरेडी पता है कितना है? 3,12,000. तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना है? माइनस करो 1,10,000 फ्रॉम 3,12,000. वी विल गेट 2,02,000, which is the equity shares. Equity shares. So PC is done. So एक इक्विटी शेयर अगर 10 रुपीज का है, 2,02,000 डिवाइड बाई 10.
So number of equity share होगा 20,200 equity shares. Just for our understanding, we have found out अगर एक शेयर 10 rupees का तो number of shares कितना रहेगा. Now we can start with the ledger accounts in vendor company. PC आ गया तो पहला स्टेप होता है डेबिट साइड में टू वेरियस असेट्स. बैलेंस शीट वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे, वी विल टेक ऑल द असेट्स. फिक्टिशियस असेट नहीं चाहिए. All the asset, let us take. Here we will show done. Now let us copy the amount. Amount also will be balance sheet amount. शेयर इशू एक्सपेंस तो लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर के बुक में आएगा. सेम वे लास्ट कॉलम ऑल्सो कुबेर ऑल्सो वी विल राइट. नेक्स्ट स्टेप बाय various liabilities. So यहाँ पे let us see what is there, what external liabilities are there. Only 3 of them. So we will write here. और अमाउंट लिख लेते हैं क्या है. For Kuber also we will copy paste. After transferring the assets and liabilities, we write down the PC due. Assets and liabilities लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पीसी का अमाउंट लिखते हैं. पीसी किसको जाएगा, बीके लिमिटेड को प्रॉफिट है तो बाई बीके लिमिटेड ब्रैकेट में पीसी ड्यू. हाउ मच इज द पीसी, 3,12,000 and 4,65,000. बंटी लिमिटेड का 4,65,000. इधर कुबेर का 3,12,000. We have done this. Now what we will do, ये होने के बाद let us write down the balances. Equity shareholders का by balance brought down. Let us see how much is the equity share balance, both the companies. 2,40,000, 1,60,000. 2,40,000, 1,60,000. So write down 2,40,000. Why in the credit side? Because equity shares is liability, credit balance. Then प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में 1,50,000, 1,00,000. बाय बैलेंस brought down 1,50,000 and 1,00,000.
Then we have general reserve profit and loss account. The general reserve profit and loss account is profits. Profit equity shareholder को मिलेगा 45,000, 40,000, 30,000, 21,000. So this we will write. So here we will write by general reserve and by profit and loss account. So let us write the amount what we have got. हम लोग को जो अमाउंट दिया है वो लिख लेते हैं 45,000 and 30,000 and इधर लिखेंगे 40,000 and 21,000, 40,000 and 21,000. So this is also done. Now let us see profit equity shareholders को belong करता है. This we have already written in realization account. Transfer हो गया है. ये सारी assets का transfer भी हो गया है except share issue expense which is a loss. अगर profit equity shareholder को मिलेगा तो loss भी equity shareholder को मिलेगा. This will come in the, this is, हम इसको क्या मानते हैं, ये credit balance है, reserves. ये debit balance है, share issue expense 12,000, 7,000. So equity shareholder account में जाएंगे and we will write to share issue expenses. Share issue expenses, how much it is? 12,000 and 7,000. Now what we will do, ये भी हो गया. Now realization expense, हम एक और अकाउंट यहाँ पे बना रहे, that is, मिनट, पीसी का ऑपोजिट इफेक्ट हमने नहीं दिया ना. पीसी का दूसरा इफेक्ट, पीसी का एक इफेक्ट इधर है बाय बीके लिमिटेड पीसी ड्यू. तो बीके लिमिटेड में टू रियलाइजेशन करके आएगा ऑपोजिट इफेक्ट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,65,000, 3,12,000. ये हो गया. नाउ see one more thing, ये है ना, यहाँ पे हम 8,000 इधर लिखने का छोड़ के यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे हम सिर्फ 5,000 लिखेंगे क्योंकि 8,000 सॉरी यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे क्योंकि 8,000 में माइनस जो हमारा 3,000 है ये लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए साइड में रखने बोला है. You will, when I have already told you, the first line of Kuber Limited, here they have told ये जो 3,000 है हमें लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए साइड में रखना है. तो हम लोग जब यहाँ पे भी 3,000 हमने साइड में रख के सिर्फ 5,000 न्यू कंपनी में गया है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, here the cash account we will show that 3,000 by balance brought down how much, 3,000 which we have kept aside for realization expense. तो कोई लाइबिलिटी तो पे नहीं करना है बट रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय, पैसा बाहर जाएगा, realization, it is which expense, liquidation expense, liquidation expense, how much we have to pay, 3,000. So by realization becomes by का opposite, to cash bank, to cash bank account, which is how much we have to pay, 3,000. We have to pay 3,000 for cash bank. I mean cash bank, नहीं, for
dissolution expense. If you want, you can write here liquidation expenses 3000 हमने यहाँ पे यूज कर लिया. अभी क्या करेंगे, लेट अस सी हाउ डू वी, हम हमारा पीसी कैसे पे करने वाले, हमने ऑलरेडी लिखा है हमारे पीसी में. पीसी डिस्चार्ज कैसे होने वाला है, इक्विटी शेयर्स इतना मिलने वाला है बंटी को, कैश इतना मिलने वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स इतना. 2,80,000 का इक्विटी शेयर, 20,000 का कैश एंड 4,65,000 का प्रेफरेंस शेयर. सो लेट अस राइट हियर हाउ टू डिस्चार्ज द पीसी बाय इक्विटी शेयर्स in BK Limited 2,80,000 by cash bank account 20,000 and by 12.5% preference shares in BK Limited. This 1,65,000 and this opposite effect, equity share in BK Limited बना रहे, बाई का opposite 2 BK, name of the opposite account. What is the opposite account? BK Limited. So इधर हो जाएगा 2 BK Limited 2,80,000 और हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अकाउंट भी बना रहे, तो बाय 12%, 12.5% प्रेफरेंस शेयर इधर हो जाएगा. नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट 2 BK Limited. It is how much? 20,000. And same way कैश बैंक में भी हो जाएगा 2 BK Limited how much cash, sorry, preference share was not 20,000, preference share was 1,65,000, cash is 20,000. ऐसे हमने लिख लिया पीसी कैसे मिलने वाला है. नाउ कुबेर लिमिटेड में पीसी कैसे मिला है, कुबेर लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर 1,10,000 and equity share 2,02,000. So equity share is 2,02,000. Preference cash तो कुछ भी नहीं मिला है and this is 1,10,000. So let us pass the opposite effect. इधर इक्विटी शेयर का कुबेर का 2,02,000 और प्रेफरेंस शेयर इज 1,10,000. This is also done. So now what we can do, we will close this books. इसको बंद करेंगे इक्विटी शेयर्स को, तो we can see only here it is there. ये लिख लिया. Same we will write in the other side also. Here also same. ये जाएगा टू इक्विटी, ये बाई है ना, बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या हो जाएगा, ये है बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स इन BK Limited. How much? 2,80,000 and 2,02,000. This is done इक्विटी शेयर होल्डर में. इसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बंद करेंगे,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बंद करेंगे तो इधर सेम विल कम हियर, सेम विल कम हियर, एंड कुछ भी नहीं है माइनस करने को तो सेम विल कम हियर. इसको बोलेंगे बाय. ये किधर जाए, ये किसको दिया है, ये प्रेफरेंस शेयर हमने दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव गॉट प्रेफरेंस शेयर्स in BK Limited. So buy preference shares becomes 12.5% preference shares in BK Limited. So it will come the same amount. It will come the same amount. And now final one, एक और अकाउंट को बंद करना है, वो है कैश बैंक अकाउंट. तो इधर है 20,000, इधर है 3,000. सेम will come in the other side. इधर तो 3,000 टैली हो जाएगा. इधर बाय, ये किसको दिया है 20,000 का कैश. It is given to equity shareholders account. 20,000. See here, PC में देखो, we will, when we see the PC for equity shareholder, उनको 2,80,000 equity shares and 20,000 cash. So this cash belongs to the equity shareholders. तो हमने लिखा by equity shareholders. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएंगे, बाय का ऑपोजिट टू. इक्विटी शेयर होल्डर्स में we will go and we will write to, name of the opposite account, cash bank account, name of the opposite account, and we will write here 20,000. So इसके बाद what we will do, we will सब अकाउंट को क्लोज किया. Cash account closed 12.5%. This is closed. Equity share is closed. Now अगर इसको टैली करेंगे ना तो ये अकाउंट भी टैली हो जाएगा. बंटी लिमिटेड, BK Limited. So BK Limited here also. And ये क्लोज करो, सेम आएगा. 4,65,000 and 2,80,000, 20, 1,65,000 को ऐड किया तो 4,65,000, 2,02,000, 1,10,000 को ऐड किया तो 3,12,000. So this way this is tally. Now what we will do, tally this, whether you are able to tally this. देखो ये tally हो रहा है. कौन सा साइड हैवी है, क्रेडिट साइड इज हैवी, सॉरी डेबिट साइड इज हैवी. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो इधर भी लिखेंगे. और जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे बाय. कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में कोई भी डिफरेंस रहेगा तो दैट विल गो टू रियलाइजेशन. जो भी डिफरेंस रहेगा दैट विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट. हियर इट इज 15,000, हियर इट इज 10,000. So by realization, in the realization account, by realization will become 2. What is the name of the account? Preference share holders account. How much it is? 15,000 and this is 10,000. Now close the realization account. Close the realization account. See which side it is heavy. Realization account, you will see that the debit is heavy. Debit side is 6,68,000. मतलब debit all expenses and losses. Debit side is heavy. Debit side is heavy. We write it here also. और माइनस करके देखो जो भी आएगा बैलेंस, इट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. में जो भी बैलेंस आता है
is transferred to the equity shareholders, and because debit is heavy, it is loss. डेबिट साइड हैवी है तो ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे. ये 3000 का लॉस है, ये 12,000 का लॉस है. सो व्हाट यू गेट हियर, इट इज लॉस. रियलाइजेशन अकाउंट में देयर इज अ लॉस. आई वांट टू हाईलाइट इट, लॉस है इधर. तो ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे. बाय इक्विटी शेयर becomes to realization. Name of the opposite account loss. Here it is 3,000. Here it is 12,000. Now finally our equity shareholders account will tally. क्या हो जाएगा? Equity shareholders account will tally. देखो whether equity shareholder account is tally. Here we are getting 3,15,000. Here we are getting 2,21,000. See whether you are able to get the same answer here also. See यहाँ पे भी add करो, आपको मिलेगा 3,15,000 and 2,21,000. And you will say that finally our equity shareholders account have tallied. Debit is equal to credit. With this sum is done. Thank you very much, everyone.